So let's start our lecture number 9 on work energy and power. Lecture number 9 on work energy and power. So आज का जो हमारा लेक्चर है, we are going to study the motion on a spherical surface. So लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ऑलरेडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख रहे थे. तो इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी हैव सीन सर्टेन कंडीशन के व्हाट शुड बी माय कंडीशन ऑफ लूपिंग. पूरा सर्कल लूप करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, दैट वी हैव सीन द कंडीशन. देन वी हैव सीन द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड इन द लास्ट वी हैव सीन द कंडीशन व्हेन माय पार्टिकल विल मूव आउट ऑफ द सर्कल. सो इन तीनों में हमारा टेंशन और वेलोसिटी के बीच में who is going to get zero first, that is we have to see which one is going to get zero first. ठीक है, इन्हीं का ही इंटरप्ले is going to give us those condition. लास्ट लेक्चर, अब इस लेक्चर में इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट लेक्चर. अब यहाँ पे भी हम सर्कुलर मोशन ही देखेंगे, बट हेयर we are going to see the motion on the spherical surface. So that means a ball is moving on the spherical surface, so we have to find out the velocity as a function of theta. Okay, at particular point of time this will be its velocity, at particular theta this will be velocity, और हमें वो theta निकालना है at which it will leave the surface. ठीक है. Second is we are going to see the vertical circular motion. Second vertical circular motion we are going to see. In this we are going to see the same vertical circular motion जो हम पहले देख रहे थे, but we are going to see in the non-inertial frame of reference. That means the frame earlier was having the we are only considering the gravitational force G, but here now the non-inertial frame will be there, so there is some acceleration is going to come over when we are going to analyze with the non-inertial frame of reference. We are going to see the same vertical circular motion in the inclined plane. Now today we are going to apply some concepts of those vertical circular motion into some advanced level questions. So this is what the scope of today's lecture number 9. ठीक है, so let's move in. So first thing is motion of a particle on a spherical surface. ठीक है, so we have a sphere here, ये sphere है, ठीक है, and in that the particle is there. You give a velocity to this particle, initial velocity, and it will move along the surface, and at certain point of time it will leave the surface and fall back. ठीक है, it will leave the surface and fall back. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स निकालने मेरे को. एक तो ये जो वेलोसिटी हाउ इट इज़ चेंजिंग, दिस वेलोसिटी हाउ इट इज़ चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दिस थीटा के अकॉर्डिंग हाउ दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट थीटा ऑन विच दिस बॉल विल लीव द सरफेस. So these two things we have to find out. ठीक है, first we will find out the value of velocity as a function of theta. How we are going to find out? हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम में so initial velocity is this, so initial kinetic energy is half mv naught square. Work done by the gravity is my mg into this displacement. This displacement is nothing but this is my r cos theta, and this is my total value is my r, so this will comes out to be r minus r cos theta. So r 1 minus cos theta, or final velocity comes out to be this v square. So if we remove the m, we got the value of v square as this. V square is equal to initial velocity plus 2gr 1 minus cos theta. So this will be my velocity. We don't have a friction. If the surface is smooth, then this is my velocity at certain angle theta. ठीक है. Now I have to find out at which theta it is going to leave the contact. ठीक है, we have to find out that theta. So to leave the contact, जब तक ये कॉन्टैक्ट के साथ साथ है, इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो एट दिस पॉइंट ओनली इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी व्हेन इट लीव द कॉन्टैक्ट. सो एट दिस पॉइंट इट इज़ हैविंग दिस वेलोसिटी. नाउ इसके ऊपर जिस पॉइंट पे लीव कर रहा है तब तक तो सर्कुलर मोशन है. विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं इसमें. तो ये कितना हो गया, दिस इज माई एम जी, दिस विल बी एम जी कॉस थीटा. ठीक है, एम जी कॉस थीटा एंड दिस विल बी एन. सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, जो इस पॉइंट की मेरी वेलोसिटी होगी. और वी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है. वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर हेयर. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर हेयर, we know कि इस पॉइंट पे the normal will get 0 because it is leaving the contact. So normal 0 करके we put the value here. cos theta को दोनों साइड पे लेके, and I calculate the value of cos theta as 2gr v naught square divided by 3gr. So that is my value of cos theta when the ball is moving and it will leave the contact on the surface. So this is the value of theta. Okay, so you can directly apply the formula, और सिंपल अपना दो इक्वेशन लगानी है. एक तो फोर्स इक्वेशन एंड अनदर वन इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं. सो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r. ठीक है, at a position where the radius of the particle makes an angle 30 degree with the vertical. So already a particle at 30 degree from the vertical है. The particle is released from the rest
what is the, so rest से release किया, so initial my just after the release initial velocity is 0, so initially then we have to find out what is the force exerted by the sphere on the particle just after the release. So just after the release we have to find out this normal. Just after the release we have to find out the normal. Okay, because we have to find out the sphere exerted by the sphere on the just force exerted by the sphere on the particle. So this normal we have to find out on the particle. Second is find the distance traveled by the particle before it leave the contact. So we have to find out this distance, दिस ए बी बिफोर इट लीव द कॉन्टैक्ट. थीटा नहीं पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस पूछा है. ठीक है, तो दिस विल बी माई, अगर ये 30 है और ये ओवरऑल थीटा ट्रैवल किया, सो थीटा माइनस 30 इंटू दिस रेडियस विल बी माई डिस्टेंस. सो फर्स्ट विल फाइंड आउट कि एट दिस पॉइंट एट द इनिशियल लेवल व्हाट विल बी माई नॉर्मल फोर्स. सो इनिशियल पोजिशन पे माई वेलोसिटी विल बी 0. सो अगर मैं यहाँ पे इस पे अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन विल अप्लाई द सेकेंड लॉ. इट विल बी एम जी कॉस थीटा इधर होगा, एम जी साइन थीटा और नॉर्मल ऊपर होगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाया. सो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज नथिंग बट माई एम वी स्क्वायर बाय आर. सो इनिशियल पे वेलोसिटी 0, सो एन कम्स आउट टू बी एम जी कॉस थीटा. सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ नॉर्मल विच इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज. सो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो एंड यू गेट द वैल्यू एम जी बाई 2. दैट इज योर नॉर्मल. ठीक है, सेकेंड पे है मेरा. Then I have to find out when it will leave the contact. Suppose it will leave the contact at point B. Now we have to find out this theta. We have to find out this theta at which is going to leave the contact. So initial, it is starting from rest. Initial kinetic energy is 0 plus ये distance कितना travel किया इसने. So this is my r cos 30 degree. R cos 30 degree ये वाला. This one is r cos 30. और then I have to find out this one. So this is my theta, so this will comes out to be r cos theta. So r cos 30 degree minus r cos theta is the vertical displacement, vertical mg. So इसकी वजह से work done by gravity हुआ, that final velocity comes out to be half mv square. ठीक है, and at this point it leave the contact. We can apply the second law again along this direction. mg cos theta plus n is equal to mv square r. Normal को I put it 0 and we have got this relationship. यहाँ से I got the value of v square at gr cos theta. यहाँ से v square की value we just put it in this equation and got the value of cos theta. Cos theta comes out to be equal to 1 by root 2, क्योंकि इस equation में we have two unknown theta and v. So theta हमने force equation से निकाल दिया. Force equation से we put n is equal to 0. We have to find out कि particle कब contact से अलग हो रहा है. So at that point we got the value of v square as a function of theta यहाँ से, and we just put the value here and got the value of cos theta finally. Okay, so that has been asked in this question. So next we will move on. अब देखते हैं हम लोग circular motion in non-inertial frame of reference, right? Circular motion in non-inertial frame of reference. So case 1 देखते हैं. When we have the vertical acceleration, when this lift is there and it is moving with acceleration a, or then in that you are doing a uniform circular motion in this direction. ठीक है, initial velocity vp दिया. So we have to find out the velocity at point q, and we have to find out कि ये circular motion पूरा करने के लिए what should be the velocity at point p. So these two things we have to find out. So we know at this point the tension can be 0. The tension can be 0 to do it, and the minimum tension should be there. T should be minimum at this point, and the minimum will be equal to 0. So it should be अगर यहाँ पे tension की value greater than 0 है, then it will do the complete circle. So we'll take the extreme value T minimum is equal to 0 at point Q. ठीक है, so यहाँ पे मैंने work, if I apply the force equation, so here it will come. यहाँ पे कितना होगा mg effect if we analyze this with the frame of reference of this lift. So इसके respect में then this particle is having the acceleration downward because it's a pseudo force is going to come. The acceleration will be downward और इस पे g भी नीचे लग रहा होगा. So g effective आ रहा होगा मेरा nothing but g plus a. ठीक है, so यहाँ पे g plus a आ रहा है. So I'll put here इस पे जो लग रहा होगा it will be nothing but m g effective, which is g plus a is equal to m v q square by l. ठीक है, m से m कैंसिल. सो यहाँ पे जो मेरा v q आ रहा है that is nothing but my g effective into l. ठीक है, सो वही जो हमने पहले वाला केस देखा था उसमें कितना आता था g into
एल, दैट इज़ माई वेलोसिटी एट द दिस पॉइंट वी क्यू, ठीक है। और इस केस में कितना आ रहा है, जी की जगह मेरा आ गया जी इफेक्टिव। और इफेक्टिव कैसे देखा हमने कि वी हैव टू सिट इन दिस, वी विल विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं, देन ओनली वी कैन अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ। इसके अंदर देखा, सो विल मेक दिस थिंग एज स्टेशनरी। इसको स्टेशनरी बनाने के लिए वी विल हैव टू सुपर इम्पोज ए हेयर, ए यहाँ पे लगाई, ऑलरेडी इस पे जी है, सो इस डायरेक्शन में इस पे टोटल एक्सेलरेशन हो गई जी प्लस ए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। सो यहाँ पे वी पी कितना आ गया, अगर आप पे वी क्यू आ गया, यू कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से यहाँ पे लगा लो, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी पी कम्स आउट टू बी वी 5 root 5 g effective into L. That is same factor which we have done it in a normal circular motion, but वहाँ पे the g की जगह यहाँ पे बस g effective हो गई, ठीक है, in the vertical circular motion. And now it is moving. Now this trolley is moving acceleration horizontal rather than the vertical acceleration. So इस वाले केस में क्या होगा मेरा g effective, इस वाले केस में, so इस पार्टिकल पे if we see on any particle, so this is my p particle, mg नीचे लग रहा होगा, and if we see it from this reference frame, so I'll make it stationary लगाने के लिए I'll superimpose the value of or I can apply the pseudo force ma इधर लगा दिया, so इसका जो net आएगा that will be in this direction. So this is nothing but root g square plus a square, root g square plus a square, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना होगा, थीटा will be ma divided by mg, which comes out to be equal to tan inverse a by g. This theta will comes out to be tan inverse a by g. और g effective कितना है मेरा, a square plus g square, root a square plus g square, that is my g effective, ठीक है। So there is two ways to solve it. So g effective means के at this point at this point it is having the maximum the g effective की जैसे मेरी डायरेक्शन आ गई, this is my g effective direction, ठीक है। So we can say this is my g resultant, so this is my the point where the tension will be maximum, and it is doing a circular motion like this, and this is the point where the t will be minimum. This is the point where t will be minimum, or we can say t0 is at this point, ठीक है। So in this way in this way we can apply the work energy theorem in this way, okay। So here if we see at this point is my t minimum, this point vq, at this point q, t comes out to be equal to 0, so we can apply work energy theorem here. So यहाँ पे मेरा कितना होगा, this is my mg effective, because now it is in this direction, ठीक है। mg effective is nothing but my mv q square, so यहाँ पे एक सेम आ गया मेरा vq आ गया मेरा, it's nothing but my l, so g effective into l, ठीक है, g effective into l सेम वाले केस का आ गया, बट यहाँ पे हमेशा याद रखना दिस विल बी माई जी इफेक्टिव डायरेक्शन। इसमें तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन यही थी, सो वी कैन से द वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी दिस, सो एट दिस पॉइंट क्यू विल बी माई टेंशन जीरो, बट हेयर जी इफेक्टिव इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वो डायरेक्शन क्या है मेरा, दिस डायरेक्शन इज माई tan इनवर्स ए बाई जी, सो दिस इज माई डायरेक्शन, ठीक है। सो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन ये है, सो नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज लाइक दिस, सो एट दिस क्यू, ठीक है, एट दिस क्यू माई टेंशन विल बी जीरो rather than this q will be tension will be 0. So I can say here at this point, at vp point, this will be, इस पॉइंट पे अगर मेरा g effective इस पॉइंट पे मेरा vq root g effective है, then only it will reach up to this point, sorry vq पे अगर मेरा g effective यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा जो मिनिमम वेलोसिटी कम्स आउट टू बी g effective into l, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आई हैव टू गिव द वेलोसिटी root 5 g effective into L. So इतनी वेलोसिटी जब मैं इस पे दूंगा तब ये पॉइंट यहाँ पे रूट, देन इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है, देन इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल। एट दिस पॉइंट माई टेंशन इज गोइंग टू गेट जीरो, ओके। सो इस पॉइंट पे, सो दैट इज द ओनली चेंज हेयर, बट इन सम सर्टेन क्वेश्चन इफ यू विल बी गिवन टू यू हेयर रादर देन हेयर, अगर यहाँ पे आपको यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेज इज बीन सेड टू यू कि आपको ऐसे एक्सेलेट किया हुआ है, बट एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट यू विल बी गिवन द यू, देन व्हाट यू हैव टू डू, then you have to be very much cautious कि यहाँ से, because now my I'll have to apply the work energy theorem, जैसे मैंने यहाँ पे work energy theorem लगाई थी, so here जो, because my direction is this direction, ठीक है, so now जो against जो मेरा mg लगेगा, so I can say the gravity now is in this direction rather than in this direction, ठीक है। So gravity is now in this direction, so in this my work done against the gravity will come to comes out to be mg into this r plus this r, this will be 2r, ठीक है, that will be 2r here, but जैसे हमने यहाँ पे देखा, so यहाँ पे मेरी हाफ एम वी पी स्क्वायर होगी
माइनस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी बिकॉज जी नीचे ऐसे लग रहा है, सो जी इफेक्टिव इंटू 2L, एल प्लस एल 2L, ठीक है, इज इक्वल टू माई फाइनल दैट विल वी पी कम्स आउट टू बी इक्वल टू √5 इफेक्टिव जी एल. बट इंस्टेड ऑफ पी आपको कभी कभार दी जाएगी ये वाली वेलोसिटी. देन यू हैव टू वेरी कॉशियस कि आपको किस पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी. सो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ये रखी है then only you have this comes out to be √GL, ठीक है, रूट जी इफेक्टिव एल. अगर इस पॉइंट की दे रखी है, अगर इस पॉइंट की दे रखी है, देन यू हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम कंसीडरिंग कि ये इट इज़ गोइंग टू राइज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये वाली लेंथ लेनी है फिर आपने दिस. then you have to take this length rather than this length you have to take. So this length is nothing but this is your L, this will be L cos theta, so this length comes out to be L plus L cos theta rather than 2L, ठीक है. यहाँ पे mg की 2L की जगह आ जाएगा हाफ, ये वाली हाफ m u स्क्वायर माइनस एम जी इफेक्टिव, ठीक है, mg इफेक्टिव इंटू यहाँ पे 2L की जगह L प्लस L cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 m वी क्यू स्क्वायर, ठीक है. अगर मेरे को उस फाइनल टी पी एट पॉइंट क्यू की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को ये इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, ठीक है, रादर देन माई पी. अगर पी दे रखा है देन इट इज़ ओके, पी पे √5GL आ रहा है आपका. अगर मेरे को ये यू की वैल्यू दे रखी है देन ओनली, यू की वैल्यू अगर आपको दे रखी है देन यू हैव टू कंसीडर दिस लेंथ. और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये तो मेरी एल हो गई, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस इज नथिंग बट योर एल कॉस थीटा. सो नाउ इंस्टेड ऑफ 2L you will be having L plus L cos theta, that is the rise of this point from here. So now everything will be from this perspective, this will be your coordinate कि यहाँ से कितना राइज जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम हेयर व्हाट विल बी द राइज L plus L, ठीक है. और ये अगर यहाँ पे है सो यू विल हैव टू सी दिस राइज, ठीक है. सो दैट इज ओनली यू हैव टू कंसीडर बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी दी गई होगी आपको, एंड देन यू बीन आस्क्ड आउट द क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस कि ये वाली वेलोसिटी के बेसिस पे. और अदरवाइज नॉर्मल केस में हमारा क्या होगा यहाँ पे कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दूँ मैंने √5g इफेक्टिव इंटू एल. तो यहाँ पे इतनी वेलोसिटी दूंगा देन इट विल डू अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन complete because t will be 0 at this point, and it will be having √g effective into r, ठीक है, g effective into r इस पॉइंट पे हो जाएगा मेरा, राइट. ओके, सो विल मूव ऑन नाउ. सर्कुलर मोशन इन द इंक्लाइन प्लेन, सो इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा ना, यहाँ पे भी जी इफेक्टिव क्या होगा इसका, अगर ये मेरा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे Q से P से if I am throwing it and there is no friction on the surface, so यहाँ से what velocity should I throw, इसके it will do a complete circle. so यहाँ पे इस पे G effective कितना होगा, नॉर्मल में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में G होता है, यहाँ पे G effective कितना आ रहा है, it is G sin theta. so instead of G we put the G effective which is G sin theta, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा 5G R sin theta, ठीक है. This is 5G effective की वैल्यू G sin theta because G is in this direction ना, G is in so यहाँ पे देखो तो G is in this direction and G sin theta will be here, G sin theta and here it will be G cos theta, ठीक है. so vertical direction में G sin theta and G cos theta, so this will my G cos theta and this will my G sin theta. so G sin theta is my, अगर मैं इस प्लेन में मूव कर रहा हूँ, सिंपल इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रहा हूँ, सो माई इफेक्टिव G विल बी G sin theta, राइट. सो यहाँ पे मेरी P और Q पे जो वेलोसिटी आएगी टू डू द कंप्लीट सर्कुलर मोशन, VP विल बी √5g sin theta r और दैट विल बी G sin theta r फॉर पॉइंट Q, राइट. so that is all we have seen. so this case will be a bit counterintuitive to understand because here we have to consider कि G effective is here in this direction, ठीक है, इस डायरेक्शन में G लग रहा है मेरा. पहले नॉर्मल केस में क्या लगता था, G will be like this वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था. तो अभी तक हमने जितना किया था और जो भी हमारा माइंडसेट है दैट इज़ ऑन दिस G ओनली, वर्टिकल G. अब जो G होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो दैट मीन्स कंसिडर इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन ओनली. जितना भी यहाँ से रेज जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी दैट विल बी mg इफेक्टिव इनटू जितना भी हाइट पे होगा, वट एवर द हाइट इट इज़ कमिंग इन. अगर ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है सो वी हैव टू कंसिडर दिस हाइट ओनली, ठीक है. अगर ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है सो अगर हम मेरे को ये वाली वेलोसिटी दे रखी है सो आई विल कंसिडर दिस हाइट ओनली, दैट इज L plus L cos theta. so that is you have to be very much cautious. okay,
Now we'll see some questions on this. Now I think all our concepts are done in vertical circular motion. Now we will apply some questions. We'll apply the concepts on the questions. अब questions करते हैं हम लोग. So यहाँ पे दे रखा है मेरे को 2 point masses M are connected by the light rod of L. ठीक है, 2 point masses means एक ये हो गया, एक ये हो गया. It is connected by this is my L and this is also L. It's free to rotate in the vertical plane. Free to rotate in the vertical plane. If I calculate the minimum horizontal velocity given to its mass so that it's complete the circle. Okay, so it should complete the circular motion in the vertical plane. So it should complete the circular motion in the vertical plane. We have what velocity should I give it here? Okay, that is what it's been asked. So L is this, L is this, so this L. So now if I give the velocity here and this omega, if I'm moving, so the velocity comes out to be v by 2 for this. We know this now. V is equal to ओमेगा इंटू आर. ओमेगा इज सेम, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर ये मेरा 2L पे वेलोसिटी v है, सो L पे वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v बाई 2. ठीक है, सो दैट इज़ माई v बाई 2. सो यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है दोनों को. ठीक है, एंड दिस इज माई रॉड. सो t will never get 0 at any point. So t at this point, if we consider 0 also, then also it will fall down. ठीक है, तो that is the case here कि my because we are using this rod की वजह से I don't have any constraint कि मेरा यहाँ पे जैसे हम अगर मेरा string होता तो इस point इन दोनों point के बीच में B, suppose this is B and this is C, so B C के बीच में the string might get slack. सो स्ट्रिंग उसमें स्लैक होने के चांसेस होते हैं, बट जब रॉड है देर इज़ अ कंस्ट्रेंट मोशन, सो दिस रॉड विल नॉट लेट द वेट टू फॉल डाउन. ठीक है, तो नहीं होगा. सो दैट मीन्स दे विल डू अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन. टेंशन विल नेवर बी जीरो. वी कैन एज्यूम कि वेलोसिटी विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. ठीक है, वेलोसिटी विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में. सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने हाफ एम वी स्क्वायर दी. इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ एम वी बाई 2 का होल स्क्वायर वी नॉट बाई स्क्वायर. अब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है? दैट इज एम और ये एल और एल माइनस. ये माइनस क्यों होगा? बिकॉज ग्रेविटी नीचे है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर है. सो माइनस एम जी इंटू 2L. और ये वाला पॉइंट कितना ऊपर जा रहा है? माइनस एम जी इंटू 4L. ठीक है, एल 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 माइनस एम जी इंटू 4L. और फाइनल दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट आके रुक भी जाए तो इनर्शिया की वजह से दोनों आगे पुश कर जाएंगे और देन इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल. फिर यहाँ से वेलोसिटी चालू करके फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, बस यहाँ पे जीरो हो जाए वेलोसिटी. सो वी कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड वी हैव बीन गिवन L की वैल्यू दे रखी है. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हियर. V को बाहर निकाल के L को इधर ले जाके इन दिस साइड विल टेक द राइट हैंड साइड L की दोनों वैल्यूज़ को एंड V की वैल्यू वी गॉट इट दिस. ओके, 48/5 GL का अंडर रूट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक a part of which is a circle of radius r. ठीक है, ये part of which is a circle of radius r. A block of mass m pushed against a string of spring constant k fixed at a left. ठीक है, ये स्प्रिंग रखी हुई है एंड एट द एंड एंड देन इट इज़ रिलीज. तो पहले इसको ये मास को पहले इसको थोड़ा कंप्रेस किया मैंने. कंप्रेस किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई स्प्रिंग की. दैट इज़ गोइंग टू डू द वर्क. देन this block will be pushed when it get released. So find the initial compression of the spring so that the block presses the track with force mg when it reaches the point P. So मेरे को वो compression निकालनी है यहाँ पे कि मैं कितना इसको compress करूँ कि जब ये block मेरा यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाए इस point पे, then it will apply a normal. block presses the track with normal यहाँ पे जो होगा that is equal to mg इस point पे मेरा. So मेरे को इधर का इस point पे जो मेरा normal है on this track will be mg. सो इस पर भी जो नॉर्मल आ रहा होगा दैट इज़ व्हाट इट इज इक्वल टू mg. इस पर भी नॉर्मल मेरा mg आ रहा होगा. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन टू अस कि मेरे को कितना कंप्रेस करना है. ठीक है, सेन विल डू दिस. सो ब्लॉक कंप्रेस्ड, सो विल एनालाइज द सिचुएशन. द ब्लॉक इज गेटिंग कंप्रेस्ड, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर्ड. जैसे रिलीज़ किया स्प्रिंग एनर्जी रिलीज, सो इसमें स्पीड आ जाएगी. इट विल गो अप टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट पर मेरे को एक रिलेशनशिप दे रखी है कि द नॉर्मल जो ये ब्लॉक इस पर पुश कर रहा होगा दैट इज़ mg. सेम कोएग्जिस्ट फोर्स कर रही कोएग्जिस्ट नॉर्मल कर रहा होगा फ्रॉम द सरफेस टू ब्लॉक विल आल्सो बी mg. सो नाउ विल अप्लाई द इस पॉइंट पे विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं. ठीक है, इस पॉइंट पे सपोज माई वेलोसिटी इज़ माई vp. सो हेयर इट इज़ mg. तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ये है, नॉर्मल इज इक्वल बिकॉज नॉर्मल इज ओनली प्रोवाइडिंग माई mv स्क्वायर बाई r. और नॉर्मल क्या दे रखा है मेरे को इस पॉइंट पे mg. सो आई कैन राइट इट डाउन n इज इक्वल टू
this mg is my normal that has been given to us, n is equal to mv square mvp square by r, m से m कैंसिल, यहाँ से मेरा vp की वैल्यू आ गई √gr. ठीक है, नाउ विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम हेयर एंड दिस पॉइंट. ठीक है, दोनों जगह वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज माई 0, फाइनल इज माई 1/2 mvp स्क्वायर. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. नाउ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी work done by the spring will be positive because kx is in this direction and displacement is also in this direction. ठीक है, so kx half kx square because along the direction of force only the displacement is happening. So work done will be positive half kx square, and work done by the gravity यहाँ से यहाँ पे rise करने में work done will be mg into minus mg into r. ठीक है, यहाँ से किया and vp I just put the value of vp here √gr and we can get the maximum compression done is this. So we can get the value of maximum compression. Right, so this is my value of maximum compression done for this block, so that it will apply a normal force at this point equal to mg. राइट, हमारे को दे रखा है ये जो ब्लॉक इस पे सरफेस पे अप्लाई करेगा नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू mg, बट सेम फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट mg, n इज इक्वल टू mg इस पे भी लग रही होगी. दैट इज दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वी हैव टेकन इट हियर ना, mg अंदर के साइड में. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बॉब ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. दिस बॉब इज देयर ऑफ मास m, इट इज प्रोजेक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √gl/2 as shown in the figure. In the consequence it moves in a circular path in a vertical plane. Okay, in a vertical plane by an extensible string which is passed over a smooth peg. Okay, so this string is there and it is passing over here and it is coming up to this point like this. So there is a smooth peg here, so it will pass up to this point. So इसमें क्या होगा ना, जब यहाँ पे velocity इसको दी हुई होगी, it will do a circular motion with this string only. यहाँ से यहाँ तक गया और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुँचेगा बिल्कुल पैक के बाद, then it will do a circular motion with this string, complete string. फिर यहाँ के बाद it will do a circular motion in this way. ठीक है, फिर यहाँ पे इस पर complete tension ये आएगी और इनिशियली ये यहाँ पे tension इस पर ये रह रही होगी. सो समझ आया, पहले इस वाले पोर्शन पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, फिर जस्ट ये इस पॉइंट के नीचे जब आएगा पी पॉइंट के नीचे, देन इट विल स्टार्ट डूइंग अ सर्कुलर मोशन विद दिस बिग वन, इट विल स्टार्ट डूइंग अ सर्कुलर मोशन. दैट इज व्हाट इज देयर. फाइंड द मैक्सिमम एंगल द बॉब स्विंग्स. सो दिस थीटा वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंगल दिस बॉब स्विंग्स. ठीक है, सो इजी है, विल फाइंड इट आउट. विल जस्ट अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम दिस पॉइंट. ये वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल बी पॉइंट पे जाके वेलोसिटी विल बी 0. ठीक है, वी हैव एनालाइज द सिचुएशन. यहाँ पे वेलोसिटी दी, पहले सर्कुलर मोशन यहाँ तक करेगा इस वाले छोटे वाले के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका रेडियस होगा l/2 और फिर फाइनल करेगा, इसका रेडियस विल बी l/2 प्लस दिस l/2. सो l प्लस l/2 फाइनल जो रेडियस होगा इसका बड़े वाले का, सो इट विल बी 3l/2 जो बड़े वाले का रेडियस होगा. फिर उसके बाद ये 3l/2 के रेडियस पे इट विल स्टार्ट मूविंग और बी पॉइंट पे जाके इट विल गेट स्टॉप. वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा व्हेन इट्स गोइंग टू गेट स्टॉप. सो विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम हियर एंड हियर एट ए एंड बी पे लगाते हैं. सो ए एंड बी पे सपोज इट इज गोइंग अप टू दिस पॉइंट, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पी. ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने ना, ये वाला, बिकॉज दिस विल बी माई mg की वजह से इट फॉल डाउन ना, इट फॉल डाउन अप टू दिस लेवल. सो mg इंटू दिस x डिस्टेंस, ये कितना है ये वी हैव टू फाइंड आउट. सो दिस x विल बी, so if we take this is my l plus l/2, l plus l/2, so l plus l/2, l plus l/2, so this cos theta, l plus l/2 cos theta comes out to be this value, l plus l/2 cos theta is this value. If I and this is my, just a second, you have to find out this value. ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को. सो आई कैन डू, ओके, सो दिस वैल्यू, this is my OP. This OP is given to me. This OP we have calculated. This is not L cos theta. It will be this will be the total length will be, this total length comes out to be this L plus this l/2. So it will be just a second. So this will be OP will be 3
L by 2 cos theta. ठीक है, total length will be OB cos theta होगी. So OB कितना है मेरा 3L by 2. OB will be L plus L by 2, 3L by 2. And OA, this O into OA मेरा कितना है, OA is my, this complete is L, this is L by 2, so OA will be L by 2. So this length OP is my 3L by 2 cos theta, and my OA, this OA is my L by 2. So this minus this, so ये वाली लेंथ मेरे पास आ गई, this minus this length is L by 2. So if I do AP निकालने के लिए first I have to calculate this OP is what, this is my length is L plus L by this total length is what, this is my L plus this L by 2. So total length comes out to be 3L by 2. ठीक है, so 3L by 2, ये भी 3L by 2 होगी, and the cos theta of that will be this value, ये यहाँ से यहाँ तक की. ठीक है, so this comes out to be 3L by 2 cos theta. So this is what, this OP value, ये O से लेकर P तक की वैल्यू हो गई. अब इसमें से if I minus this O से लेकर ये वाली वैल्यू, if I minus this value, this is what, this is my L by 2, so this value will be L by 2. So I minus it, so 3L by 2 cos theta minus L by 2, so 3L by 2 यहाँ पे आ जाएगा, so it will be L cos theta. ठीक है, so it will be L cos theta comes out to be, so this value will comes out to be, just a second, 3L by 2, then this will comes out to be L cos theta. So AP comes out to be L cos theta, just okay. So AP comes out to be this L cos theta. So now we'll apply the work energy theorem from A से this point तक, A से B तक. तो यहाँ पे मेरी initial kinetic energy is half mv square. ठीक है, यहाँ पे just change the value here. So AP comes out to be L cos theta rather than this. No, it's not be L cos theta, just a second. It will be cos theta minus 1. 3 cos theta minus 1 will be the value here. It will come 3 cos theta minus 1, this will be the value. Okay, so instead of this cos theta we'll just put the value here. ठीक है, ये वाली वैल्यू रखेंगे आप, AP की वैल्यू इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. ओके, सो द कंसेप्ट इज कि यहाँ से यहाँ तक में कितना फॉल डाउन किया, mg इंटू ये हमने वैल्यू निकाल ली 3L by 2 cos थीटा माइनस L by 2. तो यहाँ पे mg इंटू L कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 by 2 cos थीटा माइनस 1 by 2. ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू. ओके, रादर देन दिस वैल्यू इज रॉन्ग. ओके, इस कम्स आउट टू बी 0 एट दिस पॉइंट. माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. सो फ्रॉम हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ m cancel हो गया, and v square has been given to us GL by 2. We put the value of GL by 2 here, and GL or cos theta, so here it will comes out to be 3 by 2. Once we calculate it, we'll get a different value. This will not be the answer, so here we'll do it. So mg 3L by 2 cos theta minus L by 2, so this will be प्लस 1 by 2 m इंटू वी स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया GL by 2. ठीक है, सो दिस इज़ माई फाइनल इक्वेशन. ठीक है, अब इसमें एम्स कैंसिल, सो इट विल बी 3GL by 2 cos theta माइनस GL by 2 प्लस GL by 4. सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस GL by 4 माइनस GL by 4. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. माइनस GL by 4 इज इक्वल टू 3GL cos थीटा by 2. ठीक है, यहाँ से cos थीटा आ गया मेरा, cos थीटा do it again, that got erased. We'll do the complete thing here.
So we'll apply the work energy theorem. Initially it my half m v square plus mg इंटू ये कितना फॉल डाउन हुआ AP, mg इंटू AP कितना है 3L/2 cos theta minus L/2. This is my fall. That will be equal to 0. Okay, now I put the value of v square 1/2 m into v square की value GL/2 this will be v square है. So this is my GL/4 minus GL/2 comes out to be minus GL/4, so it will go on this side. So यहाँ पे हो गया 3GL cos theta by 2 is equal to GL/4. GL से GL cancel, 2 से 2, so cos theta comes out to be equal to 2/3. So that will be the value. Cos theta comes out to be equal to 2/3. Okay, so that was it was a mistake here. So instead of this L we have to put L/3, right? Okay, so you have understood the concept ना. यहाँ से पहले ये छोटे वाले ब्लॉक के छोटे वाले L/2 के थ्रू जाएगा, फिर उसके बाद then it will started moving in the big one. So we have to find out कि ये कितना फॉल डाउन किया. ठीक है, दिस AP की वैल्यू निकालनी है मेरे को. AP की वैल्यू कैसे निकाली हमने? दिस कंप्लीट विल बी 3 दिस L प्लस L/2 3L/2. ठीक है, दिस विल बी cos थीटा आ जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक, एंड आई माइनस इट बाई L/2, and this will give me my total fall. Okay, and we'll apply the work energy theorem. यहाँ पे मेरी velocity is 0. Okay, we'll move on to a next question. So next question देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है? A block is projected with velocity v0. ठीक है, यहाँ से it projected with velocity v0 such that it strike the point of projection and describing the path that it is shown in the dotted line. So यहाँ पे कह रहा है ये यहाँ से मूव करके it is moving with the dotted line like this and it strike back at this point itself. ठीक है, point of projection it strike at the point of projection after describing the path. If the friction exists for the path, okay, this path के लिए friction exists, in this path the friction is there, and the vertical circular motion, this motion is smooth. Assuming the coefficient of friction is mu, we have to find out the value of v0. कितना v0 दें इसको ताकि ऐसे पूरा करके वापस आके इसी को हिट कर जाए, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v. ये दोनों चीज़ें निकालनी है मेरे को. ओके, सो विल सी कि यहाँ पे जो मेरा पॉइंट होगा एट दिस पॉइंट कि इट इज़ अ मैक्सिमम, इट इज़ के टॉप मोस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, इट इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, एट दिस पॉइंट द वैल्यू विल बी VC, दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल हेयर VC. सो एट दिस पॉइंट विल फाइंड आउट कि पहले टाइम पीरियड निकालते हैं यहाँ से इसको नीचे गिरने का. इट विल डू अ प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर दैट, सो विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड कि यहाँ से यहाँ पे फॉल आउट. इट विल बी अ फ्री फॉल बिकॉज द वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो इट विल बी अ फ्री फॉल हेयर. सो टाइम पीरियड विल बी योर दिस SY is equal to UYT plus 1/2 AY t square. So this will be 0 because the vertical velocity is 0. SY will be 2r, that will be equal to 1/2 g t square. ठीक है, यहाँ से मेरी t की वैल्यू आ जाएगी. So t की वैल्यू comes out to be equal to root 4r by g, that is the value of t you got it कि इतने टाइम पीरियड में यहाँ से गिरेगा. Then we know this is my d and this is my VC. So this is my d and this is my VC, and we can calculate this DC is nothing, t is nothing but VC into time period जो हमने किया. It is a range only ना, so range will be इस range क्या होती है मेरी my x into time of flight. ठीक है, my horizontal velocity into time of flight. Horizontal velocity यहाँ पे कितनी है VC, और time of flight we have calculated. So this is giving me the value of from here d is given to me. From here we can calculate the value of VC, that comes out to be t into root g by 4r, that gives me the value of VC. Now next thing is we'll apply the work energy theorem from first we'll apply from B to C to calculate the value, to find out the relationship between the velocity here and velocity here. Then we will find out the relationship between here and here, because the velocity is going to go down from here to here. When it move from A to B, the velocity will decrease because the work done by friction will be opposing the kinetic motion.
सो फर्स्ट विल अप्लाई द वर्क पावर एनर्जी फ्रॉम हेयर टू हेयर. वीसी की वैल्यू हमें मिल गई है, विल फाइंड आउट द वैल्यू हेयर. ठीक है, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ वी बी हेयर. सो नाउ इस पॉइंट पे इज माई हाफ एम वी बी स्क्वायर, और यहाँ से वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी माइनस एम जी इंटू टू आर. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज टू आर, और फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर. यहाँ से I've got the relationship between VB and VC. VC की value already I know. I just put the value here, this value. Just put the value here and got the value of VB. Now I know इन दोनों के बीच का relationship. I know that relationship and we can put the value and find out the value of V naught. Okay, so we'll apply the work energy theorem from A to B. Initial A पे कितनी है मेरी kinetic energy is my half m V naught square at this point A. यहाँ से यहाँ तक वर्क डन वर्क डन फ्रिक्शन विल बी consuming this kinetic motion, will be making this kinetic motion will be minusing the kinetic motion. So work done by friction will be opposing this kinetic motion. So this is my initial kinetic energy minus mu mg into this d minus mu mg d is equal to half m vb square. ठीक है, फ्रॉम हेयर ये जो वी ऑलरेडी मैंने वी सी कैलकुलेट किया हुआ है, सो वी सी से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वी बी, और फिर फाइनल आई पुट द वैल्यू ऑफ वी बी हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, टू गेटिंग दिस वी नॉट वैल्यू, एंड दिस वी नॉट वैल्यू इज माई वैल्यू when it will get, and this minimum value निकालने के लिए to do the complete circle, this minimum value v naught should be equal to root 5 g into r. ठीक है, दैट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v. अगर ये रूट 5 जी आर नहीं होगी तो इस पॉइंट पे, सो बेसिकली नॉट रूट 5 जी आर, सो दिस पॉइंट पे जो वी सी पे मेरी वेलोसिटी शुड बी रूट जी इंटू वी सी शुड बी रूट जी इंटू, सो वी सी पे जो मेरी वेलोसिटी होगी दैट इज़ रूट जी आर होनी चाहिए. ठीक है, वी सी की वेलोसिटी, और दिस पॉइंट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी रूट 5 g r at this point. So इन दोनों वेलोसिटी में रिलेशनशिप पता है, फ्रॉम देयर वी कैन गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट. ठीक है, पहले वी नॉट निकालेंगे. मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट विल बी कि इस वैल्यू शुड बी रूट 5 शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 जी आर. सो मिनिमम वैल्यू इज विल बी रूट 5 जी आर. ओके, next we'll move on. So इस केस में क्या कह रहा है, बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ओ by the thread of length L. A nail is drawn into the wall at a distance L by 2 below A. ठीक है, a ball is suspended like this and a nail has been drawn below into the wall at a distance L by 2. So यहाँ से L by 2 distance पे a nail has been drawn. The ball is drawn aside so that the thread is taken to the horizontal level. So this thread initial level is this, it is taken at horizontal level O and then released. इस point से release किया. At what angle from the vertical of the ball trajectory will the tension in the thread disappear? At what angle from the vertical of the ball trajectory the tension will disappear? So, and what we have to find out, what will be the highest point from the lowest most point of the track to which it will rise. So we'll analyze the situation. पहले initially हमें दे रखा है ये thread है which is of having the length L. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ तक लेके चले गए. ठीक है, सो नाउ द पोजीशन इज लाइक दिस. ठीक है, फिर इसके नीचे मेरी एक नेल है दैट इज़ L by 2, हाफ डिस्टेंस पे L by 2 पे मेरी एक नेल है. ठीक है, तो इसको मैंने अब ड्रॉप किया एट फ्रॉम रेस्ट v इज इक्वल टू 0, और फिर इट विल फॉल डाउन. जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ तक तो ये बड़े वाले एंगल से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, पर जैसे ही इस पॉइंट पे नीचे आएगा इस नेल के, इट विल स्टार्ट डूइंग अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम दिस स्मॉल एंगल, और फिर एट सर्टेन पॉइंट इट्स की टेंशन एट पॉइंट p विल गेट 0. एट पॉइंट p it will get 0, then after that it will do a parabolic path. Then it will be a parabolic path. It will start doing a parabolic path. So that is what it's been given. So मेरे को बताना है कि वो किस point पे tension is 0. First thing is this, and second thing it's been asked कि ये वाला point जो topmost point है from the bottommost point, what will be the height of this? So it will be this is nothing but कि पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर रहा है. सो दिस L cos थीटा प्लस L दैट विल बी माई
maximum height. Oh sorry, L by 2 cos theta plus L by 2, this will be the maximum height. So we'll start here, we'll find out, we'll check the point P, we'll apply the second law at point P along the radial direction first, because we know TP is 0 at point P. So we'll apply that. So it will be यहाँ पे इसकी velocity मिल जाएगी हमारे को, वो velocity चाहिए to get the maximum height. So m vp square is nothing but my mg cos theta in this direction. ठीक है, from here I've got the value of my vp as my this L by 2, this radius is my L by 2, this it's been given ना, यहाँ से यहाँ तक L by 2 है, this is my L by 2. So L by 2 g cos theta. Cos theta is not known to me, we have to find out the value of cos theta. Cos theta will find out कि हम यहाँ से ड्रॉप करके we have reached up to this point, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के फ्रॉम द पॉइंट सी टू पी, सी से पी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. सो यहाँ पे मेरा पॉइंट रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई मैंने. सो इट विल गो फ्रॉम पॉइंट दिस, सो इट वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. सो दिस डिस्टेंस विल बी, it is total is L minus, this will be L by 2 cos theta plus L by 2. So L minus L by 2 plus L by 2 cos theta. So this will be the distance. So this is total is L. So we have to find out this distance निकालना, नहीं वाला distance कि यहाँ से इतना fall out हुआ है. So this distance we have to find out. This is nothing but this total O से लेकर this A point तक OA minus this AP dash, OA minus AP dash. AP dash कितना हो जाएगा मेरा? AP dash will be, this is my L by 2. तो पहले तो ये L by 2 हो गया, L by 2 plus L by 2, this is my cos theta. So L by 2 plus L by 2 cos theta, this is my this length, minus L से कर दी मैंने L minus, so I've got the value of this. So mg into this is the fall, this is the displacement in the vertical direction, is equal to final velocity is my mvp square. I just solve it and I've got the value of cos theta as from here we put the value of cos theta L by 2 g cos theta. So vp square की value उठा के यहाँ पे डाली, and here we have got one equation only in cos theta. Cos theta की value निकाली, we have got the value of cos theta is 2 by 3. We again put the value back in cos theta to get the value of vp as root g L by 3. Now this height we have to find out, because after this it is doing a पैराबोलिक पाथ. ये हाइट कैसे निकालेंगे? यू वाई स्क्वायर बाई 2g. ठीक है, यू वाई स्क्वायर इज माई वीपी साइन थीटा, वीपी साइन थीटा बाई 2g. साइन थीटा this my cos theta, and sin theta we can cos theta is my 2 by 3. Sin theta we can calculate, it is we can calculate the sin theta from this cos theta, 1 minus cos square theta करके, and we can put the value here and we have got the value of h. ठीक है, now total height it will rise from here, it will be this h plus L by 2 cos theta plus L by 2. ठीक है, so it will be h, total height will be L by 2 plus L by 2 cos theta plus h will be the total height that it will go. Okay, so next we'll do, next question is a point mass m connected to one end of the inextensible string of length L. ठीक है, and the other end of the string is fixed at peg, other end of the string is peg. Okay, so this is 1.1 extension thing, and the other end is peg at this point. The string is free to rotate in the vertical circle. Find out the minimum velocity given to the mass m. इस पे कितनी minimum velocity दें in the horizontal so that it hit the peg in the subsequent motion. So यहाँ पे कह रहा है कि suppose ये यहाँ से ये string connected है with this ball of mass m, इस पे कितनी मैं initial horizontal velocity दूँ कि it will go up to this point and it will come and fall back to this point itself. तो इसमें क्या हो रहा होगा, पहले it will be doing a circular motion up to certain point, वहाँ पे जाके इसकी tension will get 0, TP will get 0, and from here it will do a parabolic path and it will fall down at this path. ठीक है, so we have seen this के parabolic path में it is coming in this point we can easily get this point कि क्या value है point की, because this is my L, this is my total L. इसके perspective में this point अगर मैं ऐसे लूँ, so this is my if we say this point comes out to be, this is my theta, this is theta, this will be theta. So if this is my L, this is my L, this is my theta, so this point will be this theta, so this point will be L cos theta and L sin theta. So this ये वाला आएगा मेरा L sin theta, and this point will be, so
इधर वाली साइड में है, so we consider this as this is my axis, so x y, no we are taking this as axis, ठीक है. So यहाँ से it is moving y, this is my x, this is my y, ठीक है. So x यहाँ से यहाँ तक कितना पॉजिटिव आया, this is nothing but my L, और ये वाला कितना आ जाएगा मेरा, this is my theta, so this will be L sin theta. So this point will be L sin theta in x direction, और नीचे वाली डायरेक्शन में कितना है, this is nothing but my L cos theta, L cos theta. So the point, this point comes out to be L sin theta minus L cos theta. This point is there. So what we have to do, we have to put this point in the trajectory equation to find out the value of theta. That is what we have to do. So A से P we have seen, A से P it is doing a circular motion. From P से O, from here to here, it is coming back in a projectile motion. At point O lies in the trajectory of the projectile. So point O is what, L sin theta minus L cos theta, because this is what we have taken the axis. Okay, this is how we have taken the axis. This is my axis. Okay, so on that basis, this is my L sin theta minus L cos theta. Now we'll find out at point P, our tension will get 0 to get the value of Vp with cos theta, some relationship with the theta and Vp. So it will be mg cos theta plus t is equal to mv square r, tp is 0. So यहाँ से मेरा v की relationship आ गया root gl cos theta. Then we'll apply the this circular motion, we'll apply the work energy theorem from here to here, ठीक है. So half m u square, यहाँ से यहाँ तक rise कितना हो गया, this is my L and this is my L sin L cos theta. So L cos theta, so L plus L cos theta, so mg L 1 plus cos theta, final velocity will be half m v square, ठीक है. This is my final velocity. Now we know in the equation of projectile these 2 points should lie. So equation of projectile will be y is equal to what is my equation of projectile, y is equal to x tan theta minus gx square 2v square cos square theta. y की वैल्यू यहाँ पे रख दो माइनस एल कॉस थीटा, x की वैल्यू डाल दो एल साइन थीटा, ठीक है. और वेलोसिटी की वैल्यू इज माई जी एल कॉस थीटा and x square की वैल्यू I just put this, and from here after putting it we have got one equation only. यहाँ से only one unknown is left is theta, ठीक है. सारी because x is y दोनों L sin theta cos theta में आ गए. v की वैल्यू also you put in gl cos theta, L is known to us and you have got only unknown is theta. So आपका tan theta यहाँ से निकल के आएगा √2. sin theta you can take it, you can work on this and get the value of sin theta is √2/3 and cos theta 1/√3, ठीक है. cos theta की वैल्यू आ गई. now you put the value of cos theta in equation this, यहाँ पे cos theta की वैल्यू डालो and you can get the value of u square, ठीक है. in this if you put the value you can get the value of u square. so u की वैल्यू आ गई मेरी this is the value of u after putting the cos theta as 1/√3, okay. and here also v की वैल्यू पे भी if we put cos theta is 1/√3, so v की वैल्यू यहाँ से उठा के डालो. so u square only चाहिए था आपको at what minimum velocity you should throw. so from here you got the value of u square. theta की वैल्यू आपको पता है, you just need these two unknown are there, cos theta here और v square में ये cos theta आएगा. cos theta की वैल्यू यहाँ से उठा के just put the value here. so basically हमने क्या किया है कि we have used the equation of projectile to find out the value of theta. so equation of projectile में मुझे पता है ये दे रखा है कि after this point P it will follow a projectile path follow कर रहा है. so this point should lie on there on this projectile path. so we'll use the equation of trajectory and put these 2 points, ठीक है. और ये दोनों point we just write these 2 points in the theta, ठीक है. in terms of theta मैंने लिख दिया L sin theta minus L cos theta. now my equation of trajectory, पहले मैंने इस point पे we have applied the same 3 ways. पहले हमने इस point पे we have applied the radial direction में we put tp is equal to 0 and we apply the second law at along the radial direction and we put tp is equal to 0. from there we have got the relationship between velocity at this point and my theta, ठीक है. रिलेशनशिप आ गया रूट gl cos theta. सेकेंड मैंने मेरा क्या था कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाई टू गेट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है. बट मेरा अगेन द थीटा इज अननोन टू मी एंड v इज ऑल्सो अननोन टू मी एंड 2 अननोन्स थे मेरे. सो आई कुड नॉट, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर बट थीटा इज स्टिल अननोन टू मी, ठीक है. तो u की वैल्यू नहीं निकाल सकता था मैं, बिकॉज even if you put the value of v here, so again this whole u comes out to be in terms of function of theta. so I need the theta. so what we have done to get the value of theta, जो हमारी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी की, y is equal to tan theta minus gx square 2v square cos square theta
इसमें व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल साइन थीटा, वाई की वैल्यू एल कॉस थीटा, यू स्क्वायर की वैल्यू जी एल कॉस थीटा डाली, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एज रूट टू। थीटा वाज ओनली अननोन हेयर इन दिस इक्वेशन, वी हैव सॉल्व इट एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, रूट टू आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, एंड कॉस थीटा की वैल्यू मैंने पहले इसमें डाली, वी की वैल्यू आ गई, फिर वी की वैल्यू मैंने इसमें डाली, एंड कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे वन बाई रूट टू डाली, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। यही मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉस ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड अप विद वेलोसिटी वी नॉट अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन ऑफ एन इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ओके। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड ए बी एंड दिस इंक्लाइन प्लेन और दिस ए बी इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट द ब्लॉक मूव्स इन द सर्कुलर पाथ फ्रॉम बी टू सी। Okay, I have to find out the value of v naught. We have to find out this value of v naught so that the block should move in a circular path from b to b. So basically equation में क्या दे रखा है कि एक this inclined plane है and this circular path is there and this block is been projected with some velocity v naught. ये यहाँ पे फ्रिक्शन है that is going to slow down this velocity. ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा. I need to see this velocity that it should go along this circular path rather than just go like this. ऐसे नहीं जाना चाहिए, it should go along the circular path, ठीक है। So circular path के लिए I know the velocity should be minimum here and velocity should be minimum here to follow the circular path. So that is what we are going to find out. So circular path के लिए हमारी जो conditions होंगी that will be first thing is कि at this point the velocity should be this point the velocity at this point at this point B, so it should not lose contact at point B. So first thing is that कि point B पे contact नहीं lose करना चाहिए and point B पे enough velocity होनी चाहिए that it should reach point C, ठीक है। इसकी velocity यानी इतनी होनी चाहिए कि it should reach point C, the topmost point, ठीक है। ये दो condition है हमारी कि it should not lose contact at C. अगर यहाँ पे velocity बहुत ज़्यादा होगी so it will rise up like this, ठीक है। So that should not be there, should not lose contact at C. So that is the first condition we will do. Second condition से मेरा क्या आएगा कि इतनी minimum velocity यहाँ पे होनी चाहिए कि it should reach up to point C. ऐसा नहीं है कि वो बीच में ही रुक जाए, ये दो चीज़ें चाहिए। और यहाँ पे minimum velocity, यहाँ पे velocity का factor change क्यों होगा? Because my friction is there that is slow down this velocity. So we have analyzed, now we'll apply the concepts. So we have seen at point B we should not lose contact, so n should be greater than 0. That is the first condition we are going to apply. So यहाँ पे हो गया मेरा mg cos theta. So this is my mg, so it's actually mg cos theta minus n is my mv square by r. So इस point पे मेरी velocity आ गई, so n should be greater than 0. We put it and we have got velocity should be lesser than root gr cos theta, so that it should not leave the the n should not 0, it should not lose the contact. Now we apply the work energy theorem from A to B to get the value of this V in terms of V naught, because we have to find out the value of V naught. So हमें V naught में relationship चाहिए, so we'll apply that. So first A से B के बीच में apply करते हैं work energy theorem apply करी. So it start from here. So initial kinetic energy is half mv square minus एक तो इसका एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी दिस, जो रेस करेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस because it is it is going up against the force of gravity, and the friction will also be opposing this work, so that its final velocity will come down, kinetic energy कम हो जाएगी. So initial kinetic energy minus mu mg is in this direction, so this is my mu n will be mg cos theta because mg is in this, cos theta will be in the, so इस direction में ये mg होगा, this will be mg cos theta and this is my n. So n will be equal to mg cos theta or mu n my friction, so it will comes out to be mu mg cos theta into L. If I take this length as L, we can easily calculate this value of L because this theta 37 degrees given to us, 37 degrees. So this is my R, so from the R we can relate this L because 1037 degree and this R is been given, we can relate it. So here we have got it, and then
in this direction, so this is my L, and in this direction is my mg sin theta, in this direction. So mg sin theta into L is my work done against the gravity. Then the final velocity comes out to be half m v square. Okay, now v square we have taken it out from here. So v square की वैल्यू मेरी it comes out under the terms of v naught मेरी आ जाएगी यहाँ पे v square, and I just put the value of mu की वैल्यू tan theta डाल दी मैंने यहाँ पे. I put the value of mu as tan theta, and I just put the value of L as my tan theta is my r by L. So L comes out to be equal to r by tan theta. ठीक है, r by tan theta. So I put the value of L r by tan theta. ठीक है, म्यू की वैल्यू tan theta डाल दी and L की वैल्यू r by tan theta, and I solve this equation. It comes out to be v square is equal to v square minus 4g cos theta into r. So now we know from here this value should be lesser than this, and we put this value less than this value. v square से कम इसकी वैल्यू. ठीक है, so we put this value from here. We have got the value of v naught should be less than root 4 gr. v naught should be less than root 4 gr. First condition we have got it. Second is it should reach up to this point. That is my second condition. ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ minimum velocity होनी चाहिए. It should reach up to the point B. That is what we have to see the other situation. That is we are going to get it from when we apply the work energy theorem from here to here. So now we'll apply here. So half mv square, यहाँ पे the surface is smooth, so यहाँ पे half mv square, we just have the work done against the gravity only. So minus mg, this value will be r cos theta. So this value is total is r, this is r, so this value comes out to be equal to r minus r cos theta, this value. Okay, so this value is this is half mv square minus mg r into 1 minus cos theta. Final velocity is half mv square. Now v square, we have got the value of v square here, so we just put the value of v square here because we need the v naught की वैल्यू निकालनी है ना मैं. तो we just put the value of this यहाँ पे जो v naught की टर्म्स में हमारे पास वैल्यू आई है, we just put the value here. We equate v square from equation 2 here. We put the value here, v naught minus 4gr equal to v1 square plus this. Now my value of this v1, this यहाँ पे जो velocity है, that should be greater than 0. That should not, यहाँ पे कुछ ना कुछ velocity होनी चाहिए. So this v1, okay, yeah, this velocity should be there, so it should have the enough velocity to reach C. That means it should be यहाँ पे जो C पे ये यहाँ पे कुछ मेरी B पे velocity होगी, so it should be कि C पे जो velocity होगी should be greater than equal to 0. Minimum should be 0, but it should be greater than 0 होनी चाहिए. ठीक है, तभी वो B की minimum velocity होगी कि वो C तक पहुँच पाए. नहीं तो अगर C की velocity 0, अगर C पे कुछ velocity हुई नहीं, C की velocity less than 0 है, that means B की जो भी velocity होगी it will stop the particle here. It will never reach up to C. So C पे पहुँचने के लिए मेरे को देखनी पड़ेगी जो V1 होगी ना, that should be greater than equal to 0. ठीक है, so minimum value should be 0. So यहाँ पे मैंने V1 की वैल्यू निकाली from here. We just put it here. So we have got the V1 as V naught square this, and we just put it's greater than 0. From here we have got the value of V as 2gr 1 plus cos theta. Cos theta की value we have already known this theta. We put the value of cos theta, cos 37 degree, and we have got the value of V as this. So now two condition has come. V should be less than this and V should be greater than this. So this is my situation. V should be root 18 rg root 5 से बड़ा होना चाहिए मेरा V naught, but lesser than root 4gr, इससे कम होना चाहिए. So that is the condition we have got it. Okay, so that is the condition we have got it. So एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. So इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, इट इज़ अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन कि एक बॉल है, इट इज़ मूविंग अंडर दिस टू सर्कुलर पाथ्स.
यहाँ से मूव कर रही है, इट विल गो अप टू दिस पॉइंट. सो क्या होगा ना, जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी इट विल लीव कॉन्टैक्ट, बट इट विल नाउ इन द कॉन्टैक्ट विद दिस दिस सेकेंड सरफेस. एक तो ये पहला सरफेस है विच यू कॉल ए सरफेस, देन दिस इज माई सरफेस बी. ठीक है. सो पहले तो ये बॉल इट इज़ ऑन द ए सरफेस. ठीक है, ए सरफेस पे रहेगी. फिर अप टू सर्टेन पॉइंट एंगल थीटा इट विल बी ऑन द ए सरफेस. फिर ये ए सरफेस को लीव करके इट विल गो ऑन द बी सरफेस. इट विल गो ऑन द बी सरफेस, देन इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन द बी सरफेस, then up to this point then it will come onto the A surface. So that is what is going to happen, but it will be under this surface only. तो initially जो आएगा मेरा normal इस पे आ रहा होगा normal, because of surface, because of this A, then ऐसे normal आ रहा होगा because of this, and then finally at certain angle theta it will start having the normal from B. Initially it is having the normal from A. So now we have to find out the n as a function of theta. We have to find out the normal as a function of theta, and we have to calculate the value of na and nb between 0 to pi. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में na और nb की we have to calculate the value. Okay, that is what we have to do. So we have analyzed up to 0.32 theta. Na circular motion will be because of na along the na. After that it will be nb. ठीक है, at 0.2 it is at this point na will get 0, so we'll apply the second law at this point. So यहाँ पे क्या होगा मेरा, so this will be mg, so this will be mg cos theta होगा यहाँ पे, so not be sin theta. mg, this is theta, so this will be mg cos theta minus this is na, so mg cos theta, so it is not sin theta, just so it will be mg cos theta. This is na, mg cos theta minus na is nothing but my, और ये मेरे को शेल के बीच का डिस्टेंस दे रखा है d, so इसका विल कंसिडर इट दे आर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, so it will be d by 2, हाफ इसका सेंटर पॉइंट, so mv square r plus d by 2. ठीक है, so that is one equation. Second equation will be from the work energy theorem we can get it, because we are having two unknown here, v and cos theta. So we'll get the second equation. Initially it dropped from the rest, so kinetic energy is 0, then it dropped from here to this point, so this distance will be 1 minus cos theta. This distance will be 1 minus cos theta, so we can say r plus d by 2, 1 minus cos theta comes out to be this velocity at this point will be final kinetic energy will be 1 by 2 mv square. ठीक है, if we solve both of them, if we put the value of this we need v square और इसको मैं r d by 2 को इधर ले जाऊँ, and same, and this will be 2 1 minus cos theta. If I put the value of v square divided by r plus d by 2, इसकी वैल्यू अगर मैं सिंपल ये एम वी स्क्वायर और इसको मैं इधर ले जाऊँ बस r plus d by 2 को, I've got the value of this, I put the value here, and from here we've got the value of na as mg 3 cos theta minus 2. So that is my value has come. Now as we know theta increases, cos theta will decrease, cos theta decrease करेगा, na will keep on decreasing. So that is what the case, जैसे जैसे theta increase करेगा cos theta decrease करेगा, na will decrease. So na will get 0 at cos theta is equal to 2 by 3. na will get 0 at cos theta is equal to 2 by 3. From here we can easily calculate na will get 0 at cos theta 2 by 3, and at theta is equal to 0, we have got this value 1, so na comes out to be equal to mg. So at theta is equal to 0 is simple mg होगा और ऊपर इस पे na लग रहा होगा, simple mg नीचे ऊपर na. So at theta is equal to 0 na comes out to be mg. Now with theta greater than, इससे जैसे थीटा बढ़ जाएगा थीटा ग्रेटर देन दिस, सो नाउ द एन बी विल कम रादर देन एन ए. सो इस पर आप फोर्सेस लग रही होंगी ऐसे, एन बी एम जी होगा और ये एम जी साइन थीटा. सॉरी, दिस इज एम ए एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा. सो यहाँ पे आएगा मेरा, जस्ट सेकेंड, अब ये नीचे वाले सरफेस पे आ गया, नीचे वाले सरफेस पे इज गेटिंग एम जी, ओ सॉरी एन बी एम जी, so here it will be minus
here it will be minus. So पहले वाले केस में था मेरा यहाँ पे था, so here mg ये होगा, this is my mg cos थीटा, और ये होगा मेरा na ऊपर, ठीक है. सो पहले वाले केस में ऐसे आएगा na mg और mg cos थीटा, दिस इज माई थीटा. सो mg cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा माइनस na इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वाली चीज़. सेकेंड केस में जब मेरा इस वाले पॉइंट पे होगा, सो मेरा नॉर्मल सरफेस बी से आ रहा होगा, सो इस पर ऊपर होगा नॉर्मल. दिस इज माई एन बी, दिस इज माई एम जी. नाउ दिस विल बी माई एम जी साइन थीटा एंड दिस विल बी माई एम जी कॉस थीटा. यहाँ पे होगा एन बी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस टी बाई टू, ये वाली सिचुएशन होगी यहाँ पे, ठीक है. सो दिस विल बी माई व्हेन आई एम हैविंग कॉस थीटा ग्रेटर देन 2/3 पे ये जो बॉल है इट विल फॉल ऑन टू दिस स्फेयर, दिस बी स्फेयर, ठीक है, जैसे ही मेरा थीटा ग्रेटर देन 2/3 होगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन बी माइनस दिस. सो दिस इज माई इक्वेशन. सेकेंड इज आई एम गोइंग टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज माई हाफ एम वी स्क्वायर, initial kinetic energy. So here what we have done, okay, at this point if my velocity is v, so initial kinetic energy is 0. यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करने में the potential energy, the increase in work done by potential energy is equal to my final kinetic energy. So final kinetic energy is my half mv square. Increase in potential energy will be mg. यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस मेरा आया होगा, if this point is my, यहाँ पे मेरा अगर एन बी लग रहा होगा, so at this point the fall will be mg r plus d by 2 into 1 minus cos theta. Okay, so from here if we solve these two equation, and we have got nb as mg 2 minus 3 cos theta, and from here we have got at cos theta is equal to 2/3, we have got nb is equal to 0 and cos theta is equal to, if my cos theta is my if it is up to this level, that means cos theta is equal to -1 means cos theta pi by -1. So this will comes out to be equal to, if cos theta is equal to -1, so if we put the value of -1 here, so it will comes out to be 5 mg is equal to nb. So here this if we draw a graph, so 2/3 पे cos अगर मेरा if cos theta और na और nb के बीच में cos theta is my 2/3, then na comes out to be equal to 0. If cos theta is 0, that means cos theta is value 1. If we take cos theta value 1, it comes out to be equal to mg. Now we'll take at pi, at this pi, if the ball comes out up to here, so at this pi theta comes out to be equal to pi, cos theta comes out to be cos theta comes out to be equal to -1. So here it will comes out to be equal to 5 mg rather than mg. This is 5 mg because here -1 it will be 3, so it will comes out to be equal to 5 mg. So this graph will not be like this, this graph will be like this. So at -1 the value should be like this, so it will be 5 mg, the value should be 5 mg rather than this. Okay, so this graph is not right, this value should not be there, it will go this 5 mg here, 5 mg at this -1. Okay. सो इस क्वेश्चन में बस यही कॉन्सेप्ट था कि पहले ये बॉल पे इट इज़ डूइंग सर्कुलर मोशन इन दिस सरफेस, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जैसे ये एट सम सर्टेन एंगल थीटा से इट गेट डिटैच फ्रॉम दिस सरफेस, इट विल बी नाउ डूइंग अ सर्कुलर मोशन इन दिस सरफेस. ठीक है, सो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एन ए एंड एन बी एट 0 एंड पाई के बीच में. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन, that is what we have seen from 0 to pi. So nb यहाँ पे हमारा यह है and nb here it comes this value. ठीक है, okay, so these two things we have seen.
दिस क्वेश्चन हेयर ओनली थिंग इज कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी, दिस इज एन बी इज 5 mg, so it should not be mg, so it will be 5 mg. That is the only thing here change. And here also it is not sin theta. Earlier we put sin theta, it will not be sin theta, it will be a cos theta, right? So that was the concept here, okay, how the ball moves from this surface to this surface. So that was the concept that's been used here. And we have been asked to find out n as a function of theta. ये हमने निकाल दिया दोनों na and nb as a function of theta. और we have been asked के 0 से pi के बीच में क्या रेंज करेगा. So this is what we have find out कि theta is equal to 0 पे it will be there. At theta is equal to cos inverse 2 by 3 पे this na will get 0. So from this equation, now here with cos theta is equal to 0, if cos theta is equal to 2 pi by 3, my nb comes out to be 0. This nb is there, so no, sorry, this nb will be there, this will be, so this will not be the graph, so this will be the graph. So this will be the graph like this. This is my na graph and this will be my nb graph, and this value will be maximum value at -1 will be 5 mg. Okay, -1 will be 5 mg, and at cos theta is equal to theta is equal to 0 and cos theta is equal to 1, it will comes out to be equal to mg, na की value. Okay, that has been asked to find out, right? So that's all for today. We'll see what, we'll take a quick review and then we'll wrap up. So आज हमने we have seen motion in spherical surface, के how the small ball is rolling on the spherical surface, and if it's fall, के हमारे को we'll have to find out the theta at what time theta it is going to fall, and we have to find the velocity as a function of theta. That is what we have find out. Then we see in the vertical circular motion in a non-inertial frame of reference. Okay, if it's moving up with some acceleration, if the frame is moving right with some acceleration. So there we have seen, now we are considering this as a circular motion. This is my least point at which this is my maximum t maximum point, this p, and this is my q at the t minimum point. So we have to find out, okay, at point q my tension should be 0. Then from there we can get the value of velocity q. Okay, or same way it comes out to be root g effective into L, and here on point P it comes out to be 5 root 5 g effective into L. Inclined plane पे हमने देखा कि how is the g effective is there on inclined plane. Then we have done the questions here, right? So that's all in circular motion, vertical circular motion. So we've done almost we've done all the mechanics one. So हमने जो plan किया था. Now from the next lecture we will start doing the electrostatics पढ़ेंगे. We are going to study charges, fields, electric fields. फिर उसके बाद we are going to study next lecture flux देखते हैं, Gauss laws देखेंगे. Then we are going to study potential and capacitor, और फिर उसके बाद we'll do the current, electricity and instrument used in electric current and the heating effects of electric current. So this 4-5 lecture we are going to do, 4-5 chapters we are going to do after this. उसके बाद then we will come back to our mechanics 2, जहाँ पे हम center of mass, rotation, gravitation और mechanical properties of liquid and solids पढ़ेंगे. ठीक है? So that's all for today. I'll meet you up in the next lecture. So all right, thank you.